Hello dear students, welcome back in our today's class. I hope all of you have watched yesterday's video. Yes, as we have started our chapter 3 chemical reactions and equations. Okay, this chapter is also very important for you all. Okay, so be with each and every topics, don't skip anything. Okay, so today also we are going to see some important topics of this chapter. But before that, let's revise what we have learned in your last class. Okay, so we have seen chemical reactions. Okay, and in that we have learned about some what is physical change, what is chemical change in the reaction that takes place. Okay, so what happened during chemical change? Okay, so during chemical change, composition of matter gets changed and we get a new product. Okay, yes, for example, cooking of food and then milk turn into the curd. So this is a chemical process which takes place. Then what about physical change? So during physical change what happens? States of matter gets changed. मतलब क्या होता है? When the compound is in solid state, if the physical changes takes place, then it gets converted into liquid state or gaseous state and so on. Okay, for example, here we have seen transformation of ice into water, then evaporation of water. Okay, so that is called as physical change. Okay, yes. Then next we have learned about chemical equations, and here we have seen two types of equation, that is word equation and chemical equation. First of all, let's see what is word equation. The simple way of representing a chemical reaction in words. Okay, so here you can see this reaction where you can't see any kind of chemical formula. Okay, it is simply written in words. So that is called as what? Word equation. Okay, then the representation of chemical reaction in a condensed form using chemical formula. Here you can see chemical formula. Okay, in the last equation. Yes, so that is called as what? A chemical equation. Okay, then we have seen how to write a chemical equation, and here we have seen 5 to 6 steps that how to write a chemical equation and what is important when we are writing a chemical equation. So यहाँ पर क्या दिया है? Reactant कौन से side होते हैं? On the left hand side, and products are written on the right hand side. Okay, so plus sign, here you can see the plus sign in between them. Yes, then if the product is in solid state, liquid state, gaseous state, then we can write this kind of symbols in beside them. Okay, already we have seen this in our earlier video. Then if we want to indicate heat, then we can write this symbol also. Okay, and then the last step is then the second last step, that is here you can see temperature, pressure, catalyst. As in earlier video we have seen nickel catalyst का example. Okay, and 60 degree which gives vanaspati ghee. Yes, so that vanaspati ghee wala reaction. So that in that what we have seen the nickel catalyst is mentioned over there and the temperature is also mentioned over there. Then special information, which means what? If H2SO4 है, then whether it is concentrated or it is dilute, so it is also written while writing the chemical equation. Okay, so these are some kind of steps, these are some kind of things which you need to understand while writing a chemical equation. Okay, so after that in your textbook one activity is given. Okay, so that activity we will perform in your practical lab, but just now I am reading the procedure and apparatus. Okay, so your apparatus are given, that is test tube, conical flask. Here you can see test tubes are there, conical flask and balance. Yes, then the chemical which we need, that is sodium chloride and silver nitride. Okay, silver nitride solution and sodium chloride. So we have to take sodium chloride solution in a conical flask. Here you can see. Okay, and silver nitride solution in a test tube. ठीक है, सोडियम क्लोराइड किस में है? कोनिकल फ्लास्क में,
and here in a test tube you can see silver nitride solution. Then we have to tie a thread to the test tube and insert it carefully in the conical flask. Okay, then here you can see like this we have to do the setup. Now we have to weight the conical flask with the help of balance. Okay, now we have to tilt the conical flask and mix the solution present in the test tube with the solution in the conical flask. यहाँ पर पहले इतना सेटअप करके हमें उसका वेट करना है, फिर बाद में उसको टिल्ट करके हियर वी हैव टू वेट इट अगेन, मिक्स करके बाद में फिर एक बार वेट करना है एंड यू हैव टू सी that whether the weight is remain same or it is changed. Okay, so that when we will perform the experiment we will get it at that time. So for this, now what is important is this reaction. Okay, you need to understand this reaction. यहाँ पर देखो क्या ऐड हुआ है. Okay, here sodium chloride solution is there, yes, and silver nitride solution is there. So we have written this two chemicals over here. Silver nitride मतलब क्या होता है, here AgNO3 and sodium chloride which means NaCl, salt. Okay, then it gives what, sodium chloride, and here you can see silver chloride and sodium nitride solution it gives. जब हम ये दोनों को मिक्स करेंगे तब क्या होगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. Yes, and we will get the alternate product, that is silver chloride and sodium nitride. Okay, so silver chloride which means what, AgCl, and sodium nitride which means NaNO3. Okay, so this is a word equation, and which is this equation? This equation is called as what, chemical equation, right? Because here you can see the different kinds of symbols. Okay, and with the help of symbols we have written one kind of chemical equation, chemical reaction over here. Okay, yes, so this is about that activity. Now a very important topic, that is balancing a chemical reaction. How to balance a chemical reaction, steps we will see later. First see the basics in this topic. So here you can see ये जो है ये रिएक्शन हमने लास्ट फाइंड आउट की अभी अभी प्रैक्टिकल में. ओके, एक्टिविटी में. येस, सो दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, रिएक्टेंट्स, एंड दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्ट्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ओके, ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक Ag. ओके, एंड यहाँ पर अगर दोनों साइड में हमें वो नंबर ऑफ एटम्स जो है दैट वी हैव टू गेट सेम. ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर Ag है, रिएक्टेंट साइड में कितने Ag हैं, ओनली 1, एंड प्रोडक्ट साइड पे भी ओनली 1. सो येस, दिस इज़ बैलेंस्ड. नाउ वी कैन सी N. ओके, N यहाँ पर कितने हैं, 1, एंड हियर यू कैन सी 1. ओके, एंड हियर ऑल्सो इट इज़ 1. ओके, येस, दिस इज़ बैलेंस्ड. नाउ O, here you can see O3 है रिएक्टेंट साइड पे, एंड प्रोडक्ट के साइड पे भी O3 ही है. येस, इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड. नाउ वी आर गोइंग टू सी Na यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है. ओके, एंड लास्ट वन Cl, दैट इज Cl इज़ 1 ओवर हियर, एंड हियर ऑल्सो इट इज़ 1. ओके, येस, दैट मीन्स जो रिएक्टेंट साइड के एटम्स हैं वो सेम है प्रोडक्ट साइड के एटम से. दैट मीन्स इट इज़ सीन दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स इन द अबव इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे यू कैन सी सब सेम ही है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज विच इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन. Okay, everything is balanced, all the atoms are balanced, so that is called as balanced equation. But what will happen if the number of atoms of each element is not same? For example, यहाँ पर अभी O3 है, यहाँ पर अगर O2 होता तो क्या होता, यहाँ पर O2 आ जाता. That means
ओ जो है वो बैलेंस नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो बैलेंस इक्वेशन के लिए दोनों भी साइड सेम होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while balancing a chemical reaction. Okay, yes, now we are going to see a very important topic, that is steps in balancing a chemical reaction. There are certain steps, very easy steps, which you have to follow while balancing a chemical reaction. Okay, first see what is the reaction which is given over here. It is given in the word equation, right? Okay, so sodium hydroxide plus sulfuric acid will give sodium sulfate and water. Okay, so first step में हमें क्या करना है, you have to write the chemical equation from the given word equation. So you have to convert this word equation in the chemical equation. Yes, so sodium hydroxide का symbol क्या है, NaOH, sulfuric acid मतलब H2SO4. Okay, it gives sodium sulfate, that is Na2SO4, and water, which means H2O. Okay, so we have taken this equation as equation number 10. Okay, now in the second step, check whether this equation is balanced or not by comparing the number of atoms of the various element present on the two sides of the equation. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी इट। पहले देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। Na है, यस, O है, यस, फिर H है एंड S है। सो दिस आर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ओके, रिएक्टेंट साइड ये साइड होती है लेफ्ट साइड, एंड प्रोडक्ट की ये साइड है राइट साइड। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक Na। तो ये Na है, ये रिएक्टेंट साइड पे कितना है, ओनली 1, बट अगर आप प्रोडक्ट के साइड पे देखोगे तो यहाँ पर 2 Na हैं। सो वी हैव रिटन द रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम, Na एटम इज़ 1 एंड एट द प्रोडक्ट साइड Na एटम इज़ 2। नाउ O, यहाँ पर देखो दोनों भी जितने भी O है रिएक्टेंट साइड के उन सबको काउंट करना है। तो यहाँ पर कितना है, 4 एंड हियर 1, दैट मीन्स 5। ओके, एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी 4O और ये एक 1 है, ये 5 हो गए। येस, O इज़ बैलेंस्ड। नाउ H, यहाँ पर देखो H जो है वो 2 और 1, दैट इज़ 3, एंड हियर यू कैन सी ओनली 2। येस, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। एंड द लास्ट वन S, हियर यू कैन सी S इज़ 1 एंड S इज़ 1। ओके, तो 2 जो एलिमेंट है वो बैलेंस्ड है एंड 2 जो है वो अनबैलेंस्ड है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन कब होती है, जब सब एलिमेंट जो है वो कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं, सेम होते हैं। ओके, सो वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। येस, सो वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव रिटन दिस इक्वेशन ओवर हियर अगेन। सो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, it is convenient to start balancing an equation from the compound which contain the maximum number of atom. Okay, तो अगर आप ये इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर देखो H2SO4 एंड Na2SO4 जिसके पास बहुत सारे एटम्स हैं। ओके, यस, कंपेयर टू दिस टू। ओके, सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू in the equation, this equation there are 2 components, Na2SO4 and H2SO4, which contain the maximum number. Okay, 7 atoms है each element में, so any one of them can be selected. तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले we are going to select this Na2SO4. okay, यहाँ पर देखो Na और Na ये साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे Na कितना है, ओनली 1, और प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 2। ओके, सो इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा, सो दैट Na विल गेट बैलेंस्ड। येस, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो दैट विल गेट 2 ओवर हियर, एंड यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी है। येस, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज़
in front of Na we are going to write 2. Okay students, ये जो last statement दिया है, here to make the number of sodium atom in the reactant as 2, the formula of NaOH cannot be changed to Na2OH. Na2OH ऐसा हम नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज़ नॉट अ कंपाउंड. हमें क्या करना पड़ेगा, वो 2 को जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा Na के पहले. ओके ऐसे लास्ट इक्वेशन देखो जहाँ पर बैलेंस करके दिया है. ओके यस, सो दिस इज़ द till this we have balanced the equation. Now again we are going to count the number of reactants and products. Okay पहले देखते हैं Na कितना है, 2 है. yes and यहाँ पर भी 2 है, that means it is balanced. now you can see O यहाँ पर 4 प्लस ये जो है 2 है, 4 प्लस 2 कितना होता है 6 over here and here also 1 and 4 मतलब 5 ही है, मतलब O is not balanced. now we can see H यहाँ पर कितना है 2 and 1 sorry 2 and यहाँ पर 2H है, that means it is 4 and here you can see only 2. H is also not balanced and S 1 and 1 that means 2 and S is balanced. so again we need to balance O and H. okay so यहाँ पर apply the factor of 2 to the product H2O for balancing the equation. so what we are going to do, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे so that H की जगह पे यहाँ पर भी हमें 4 मिलेगा. okay so we have added 2 over here. okay now you can see the equation. now I think the equation is balanced from all the side. okay once again we can see the equation. Na कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है. yes very good, Na is balanced. now O देखो, O यहाँ पर कितना है 4 प्लस यहाँ पर 2 that means 6 हो गए. okay and here also 4 and here also here you can see यहाँ पर कितना हो गया O 4 and this is 2 that means कितना हो गया 6 हो गया. and here you can see O 2 and 4 that means 6. yes O is balanced. now H you can see H over here, H कितना है यहाँ पर 2 and 2 that means 4 and यहाँ पर also it is 4. yes and S is 1. okay तो इनिशियली क्या था, H2O कितना था, यहाँ पर 2 ही था, हमने उसको into 2 कर दिया and we have found over here that H is 4 over here and यहाँ पर भी H कितना है 4. ओके O 6 है ये साइड पे और ये साइड पे भी O कितना है 6. ठीक है. now this equation is balanced. so in this way a balanced equation is obtained from an unbalanced equation by applying a proper factor okay to appropriate reactants and the products so as to balance the each number in the atoms with the help of the steps. so these are the 4 steps of balancing the equation. okay in the last step we have to write down the final balanced equation again and we have to see whether it is balanced or not. okay now this is homework for you. this 5 equation you have to balance and you have to keep a note of it. in your notebooks you have to write down this and you have to balance this equations. okay go through the video and practice balancing the equations. thank you.